हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो हम आज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस करेंगे, इसका क्या डेरिवेशन है, इसके एक्सप्रेशन का, उसे हम समझेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द every body in this universe attracts every another body with a force, and that force is proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. It means that let's suppose we have two bodies there, and the bodies having mass m1 and m2. So the force of gravitation between these two bodies is basically proportional to product of their masses, and जो दूसरी बात यहाँ कही गई, that is force is proportional to square of the distance between them. Let's suppose that r is the distance between the two bodies, and so after combining these two equations we get f is proportional to m1 m2 upon r square. सो यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे, वी हैव प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, सो वी हैव एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर. सो दैट जी इज बेसिकली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का जो वैल्यू है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg minus 2. This is the unit for that gravitational constant. This is a universal gravitational constant. It means that आप यूनिवर्स के किसी भी दो बॉडी के बीच में अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड आउट करेंगे तो आप इस जी का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ यू हैव टू बॉडीज एंड द फोर्स बिटवीन एनी ऑफ दीज टू बॉडीज is basically between any two bodies is proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. सो इस लॉ को हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं. सो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला बना है वो है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसिकली हमने जो डिस्टेंस लिया है बॉडीज़ के बीच में, वो बेसिकली उनके सेंटर से, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम वन सेंटर टू द अनदर इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन देयर. सो यहाँ पर जब हम इस लॉ को लिखते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लिखते हैं, तो यहाँ पर जो बॉडीज़ कंसीडर करते हैं वो हम एक तरह से पॉइंट पार्टिकल्स या पॉइंट मास बॉडीज़ को कंसीडर करते हैं. बिकॉज अगर हमारे पास कोई इरेगुलर और आर्बिट्रेरी साइज़ का अगर कोई बॉडी रहेगा, आर्बिट्रेरी फाइनाइट साइज़ का भी कोई बॉडी रहेगा, आर्बिट्रेरी रहेगा, तो वहाँ पर जो एक्चुअल जो सेपरेशन है वहाँ पर उसे हम लोकेट नहीं कर पाएंगे. सो इसीलिए हेयर वी आर बेसिकली कंसीडरिंग द बॉडीज एज पॉइंट मास बॉडी. सो जनरली क्या है कि ये जो लॉ है ये दुनिया की किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है. मीन्स जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो किन्हीं भी बॉडीज़ के बीच में लग रही है, रिगार्डलेस ऑफ देयर शेप, साइज एंड मास, वो हर बॉडी के बीच में लग रहा है. लेकिन वेन एवर वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट लॉ, दैट इज पर्टिकुलरली न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो एक्सप्रेशन है जी m1 m2 by r square, so here we are considering these bodies as point mass bodies and they have some uniform shape there, uniform type, like for example they are uniform spheres there, and like whenever we are going to measure the distance, it is from the centers of these two spheres. So यहाँ बॉडी को हम पॉइंट मास बॉडीज ट्रीट कर रहे हैं ताकि हम जो सेपरेशन है वो एक एग्जैक्ट सेपरेशन को हम ले सकें. अगर आर्बिट्रेरी रहेगा तो वहाँ पर हम बेसिकली कोई यूनिक वैल्यू ऑफ सेपरेशन हमारे पास नहीं रहेगा, तो हम इस लॉ को फ्रेम नहीं कर पाएंगे. सो that is one of the important point regarding this law. And another, that this force of gravitation is basically a attractive type of force. ये एक attractive type of force है, and this force is also a conservative force. ये एक conservative force है, and this follows inverse square law. ये inverse square law को भी follow करता है. like यहाँ पर जो force का variation है distance के साथ, that is proportional to 1 upon r square. and सम अदर पॉइंट्स लाइक जो इंटरवेनिंग मीडियम है पार्टिकल्स के बीच का, बॉडीज़ के बीच का, उसका कोई असर नहीं है. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेनिंग medium. That it is not like the Coulomb's force where the medium has some role in the force between the charged particles. So here, as you also know, that this force is the weakest force in the nature among all the three forces present there. So that was the Newton's law of gravitation. I hope आपको समझ आया होगा. Here we just discuss that key, what is the expression for that. So that expression is like force is proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between them. And this law is basically when we consider bodies at like point mass bodies or some symmetrical bodies, and we can also say that these bodies have some spherical symmetry, so that we can have like exact or unique value of separation there. And otherwise,
If body is arbitrary, we do not have any unique value of separation there. So this is all about the Newton's law of gravitation, or I can say, like, this is not all about, this law is very wide uh, in terms of understanding all other aspects, but this is the general information regarding Newton's law of gravitation. Thank you.